conflicts are not always bad. They can also be classified into functional and dysfunctional conflicts. So functional conflict is the certain amount of conflict that is necessary to keep the organization going. Because if there is no conflict, everybody would be a yes man and there would be no opportunity for innovation, for creativity, and the organization will become non-responsive and stagnant. So we require a certain amount of conflict in the organization, and dysfunctional conflict is when that conflict exceeds that certain amount and it starts to actually harm the company. For example, in an organization, the manager divides his employees into teams and then he promotes them to come up with innovative ideas, new creative ideas, and he awards the one that comes up with the best idea. So in this way, he can foster conflict, but in a healthy way that can eventually benefit the organization. Now let us quickly have a look at the causes of conflict. So first up is misunderstanding. So whenever a communication lacks context, conflicts can happen. So communication and proper communication is very essential to avoid conflict. For example, the listener interprets something else while the speaker is trying to imply something else. He may agree to certain terms and conditions without fully understanding what is being said, which can lead to conflict and tension between the two. Next is personality differences. People have different personalities, the way they act, the way they behave, the way they think, which can cause conflicts between the two. For example, type A people, they are more assertive, they are more competitive. So, and type B people are the ones that are more laid back and they are more casual. So type A people are found to be more at conflicts at workplace than type B people. Similarly, suppose I am brought up in a very conventional family, in a very conservative family, and I have a friend who has a very liberal upbringing. Now she wants to go out to party every day, but that is against what my upbringing is, that is not what my personality is. So we can have clash over that. Next is goal differences. Parties sometimes feel that their goals are mutually exclusive, they do not align with each other, and therefore they can have conflicts. This is why in HR we always study the organization goals must always align with our personal goals to prosper in the organization. Next is lack of trust. So as we have also seen in our personal relationships, agar trust nahi hota, so there is a lot of conflict, there is a lot of argument, there is a lot of tension. If the trust breaks, so communication is hampered, and which can cause more conflicts and more arguments to happen in future. Next is conflict over work styles. So people have different ways in which they work, and if wo align nahi hota, तो conflicts can happen. For example, there is a manager who believes in working outside of work hours also. He believes in dedicating extra hours to his work, whereas a subordinate does not believe so. He believes कि office का काम office में खत्म. So now this manager keeps sending messages, keeps pinging the subordinate कि you have to attend to this mail, you have to attend this call early in the morning or late at night, outside work hours also. But the supervisor, the senior might not like it. So supervisor and the subordinate might enter into arguments over the same. Lastly, poor communication. So now this is one of the most common and the major reasons why people, organizations and business leaders enter into conflict. For example, a simple set of instructions that can be miscommunicated or a simple comment that can be taken the wrong way, it can have huge repercussions. Additionally, there is a term that is known as silos effect, in which various teams and departments that are working within an organization, they do not have proper communication between them and they work in complete isolation, which can lead to poor productivity, stress and conflicts between the two. For example, there is an organization which has various teams and departments, each fulfilling their own responsibilities and working in isolation. Now the marketing department is responsible for promotion of the product, and the sales department looks into revenue generation and customer feedback. And since they are working in isolation, there is no proper communication established between the two. So the company launches a new product and it does not do well. Now the marketing team is blaming the sales team for the low revenue generation, while the sales team is blaming the marketing team for poor promotion and for missed opportunity. So this is how, if two departments or two teams, when they do not communicate properly, it can lead to conflicts and arguments as well as loss to both the departments and the organization at large. So
So I would like to conclude myself with a quote that is, conflict is present in all aspects of our life. When one has acceptance and the right intentions, then the conflict can be resolved peacefully. With these words, may I call upon stage my co-speaker Abhilash. Thank you, Anji. Thank you, Anji, for the wonderful conversation to conflict. We all need to understand conflict, whether at a personal or an organization level, there is a various effects, like a positive and negative. And these effects can complete to different conflicts. So here I need to talk about that impacts of conflicts. Let's begin with today. My topic to be covered: negative effects of interpersonal conflicts, negative effects of intrapersonal conflicts, negative effects of organization conflicts, and positive effects of conflicts. Let's begin. So, negative effects of intrapersonal conflict. So, I'm going to the negative effects. Here the first is stress and anxiety. What do you understand by stress and anxiety? Whenever you are in a conflict situation mode, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या होता है? स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है। उस चीज को हम कैसे हैंडल करें और उस चीज से हम कैसे बाहर निकलें? जैसे फॉर एन एग्जांपल, अ स्टूडेंट, दे आर इन द सिचुएशन, वो अपने पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, नेक्स्ट वो साथ साथ स्टडीज भी कर रहे हैं, तो उसको मैनेज करने में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है कि मैं इन चीज़ों को मैनेज कैसे करूँ। उसको एंजाइटी आएगी कि मैं इस चीज़ को अगर आ रहा है तो मैं इस चीज़ को हैंडल कैसे कर सकता हूँ। ये उसके लिए एक बिग सिचुएशन होती है। नेक्स्ट इज उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर वो दो चीज़ों को मैनेज कर पा रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा। अगर नहीं कर पाएगा तो वो लो करेगा, अपने आप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा और वो उन चीज़ों को ज़्यादातर स्ट्रेस में लेके जाएगा। नेक्स्ट इज अनहेल्दी हैबिट्स। ड्यू टू दैट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, उसके ऊपर सबसे मेन चीज़ होगा वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देगा, वो अनहेल्दी हैबिट और अनहेल्दी ईटिंग्स करेगा। उसको जो चीज़ें अपने ऊपर वर्क करनी चाहिए वो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दे स्टार्टिंग ईटिंग जंक फूड, द बॉडी दे आर नॉट वर्किंग एज वेल, द फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क हैम्पर्ड। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। व्हेनेवर वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट ना, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन। हम जो अपना प्रोडक्टिव वर्क करते हैं, रादर देन उस प्रोडक्टिव वर्क की वजह से हमारा कॉन्सेंट्रेशन दूसरी जगह चला जाता है, वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट, वो हमारा होता है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। हम मोर देन प्रोडक्टिव वर्क की वजह उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में अपना लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमारा चला जाता है। नेक्स्ट इज इंसोम्निया। इंसोम्निया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय? कैन एनीवन? Lack of sleep. Yeah, you're right. Due to that, for that conflict, you are feeling lack of sleepiness. You always think about it. You always think about that situation, why it has happened, what are the situation, why it created. So, उसकी वजह से हमारी जो हमारी नींद होती है वो भी खराब हो जाती है, जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगेन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें हैंडल करने होते हैं, पर हम उस हैंडल में सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ का भूल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़। जो हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। हम अगेन उसी चीज़ में बार बार होते हैं कि हम उस कॉन्फ्लिक्ट से हम निकल ही नहीं पाते। नेक्स्ट इज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। As my previous resource person Anjali Sharma talked about, there is a conflict between two persons. So what are the impacts and what are the effects which we look? So here is strained relationship. For an example, we are in the college, and next time, and after 1 year, 2 years, we will go into the corporate world. So what we think? Relationship hamper. Why? Whenever you are working in a team or in any or let's say for an example again. In a college, you are working in a group. So what is that? In between two groups, everyone has a different approach. One is the traditional approach, one is Gen Z approach. Here the Gen Z approach means that the movement that they use latest approach like a AI approach in the projects. So what is here? They come to वो एक दूसरे के ऊपर आ नहीं पाएंगे। कोई अगर कह रहा है कि मैं एक ट्रेडिशनल अप्रोच से जाऊँगा तो वो दूसरे की बात नहीं मानेगा, तो इससे हमारे क्या होगा, रिलेशनशिप हैम्पर होगा, एक दूसरे को दोनों अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेन में इसमें क्या होता है कि एक दूसरे पे लैक ऑफ ट्रस्ट होता है,
कि जैसे मान लो मेरे को अगर उसका ट्रस्ट नहीं है तो मैं उसके पॉइंट्स को क्यों सुनूँ, मैं उसको अंडरस्टैंड क्यों करूँ, मेरी तो कोई बात ही नहीं मान रहा, मैं उस चीज़ को कैसे अपने आप को कन्विंस करूँ कि वो मेरी बात मान जाए। हम लोग फिर उनका इमोशनल स्ट्रेन आता है कि नहीं वो डिससेटिस्फैक्शन है इस चीज़ से, वो नहीं मानेंगे एक दूसरे की बात को। नेक्स्ट इज डिटोरिएशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अगेन अगर दोनों के बीच में फाइट होते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मेंटल हेल्थ। लाइक हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, जिस तरीके से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए हम दोनों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, उसका व्यू पॉइंट मेरे व्यू पॉइंट से अलग कैसे है, और अगर हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। Here as physical health. Physical health is what? Whenever we are thinking about it, it impacts your mental health. Why? Because you're thinking about it, overthinking, stomach pain, stress, anxiety again increases. Next is decreased productivity. Again, in a college or anywhere else, when you are in conflict, so what is important? हमारी इसमें productivity जाती है. Like when we are in the conflict mood, we cannot choose the right decision, or we cannot do that right work. तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, जो हमें एनर्जी और टाइम अपनी प्रोडक्टिविटीज पे लगानी चाहिए थी वो हम उसको रिजॉल्व करने में लगाते हैं। नेक्स्ट इज पुअर डिसीजन मेकिंग। हियर आई विल गो विद द वन कोट, स्टिल वाटर रन्स डीप। दैट मीन व्हेनेवर वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट वी आर not able to take a decision right time at the right place. We always miss the opportunities just because of that conflict. Next is negative effects of team and organizational conflicts. So here I will go with the reduce morale. In organization there is a one important thing, reduce morale. Morale is most important thing between the team and organization. Without morale, you cannot achieve any target, any opportunities. So here, morale is one of the most important. For an example, in an organization, there is a team of 6 persons, and they get a project of to achieve in a 1 month. You have to complete the target in 1 month. But there is a one conflict in the organization that the team of my finance, sales and other teams are not collaborating to each other, and how they can achieve their targets, how to can achieve their objective. Due to that, because there is a conflict going on in the organization and the morale reduced due to that perspective. Next is reduce productivity. Whenever we are in an organization and वो हमारे सबसे इम्पैक्ट करता है हमारी reduce प्रोडक्टिविटी पे। अगर हम लोग कहीं भी वर्क करेंगे तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है उसके अंदर अपने आप को 100% शो करना, अपने आप को अचीव और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, उसके ऊपर हमें अपने आप को प्रूव करना। सो उसके अंदर हमारा क्या होगा, हमारी रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ड्यू टू दैट कॉन्फ्लिक्ट। उस ऑर्गेनाइजेशन में जब तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर। हियर आई वांट टू नो व्हाट इज द एम्प्लॉय टर्नओवर। कैन एनीवन? No? Employee leaving the organization. Yeah, you're right. You're right also. So here, increase employee turnover whenever the conflict arises in the organization. People thinking, why should I waste my time in the organization if there is any conflict? There is no matter for me. Here, I am not growing here. मेरी इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, मेरे को इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तो why should I leave? मैं इसको छोड़ क्यों नहीं देता ये ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसे है तो। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। अगेन कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट होती है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होता ही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी टीम है कभी भी वर्क 100% हो ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होने से हमारी जो हमें टीम को अचीव करने के टारगेट्स वो हमारे को अचीव नहीं हो पाएंगे। Next is creativity and innovation decline. हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3 बंदे होते ही हैं जो अपने आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज से जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन को 100% अचीव कराने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए अगर उनको 100% अचीव होगा तो उनकी भी सेल्फ ग्रोथ होगी, उनको भी अपने न्यू पोजीशंस मिलेंगे। बट अगेन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल
कि अगर वो बंदा अपने 100% दे रहा है, नेक्स्ट टाइम उसको डिस्करेज हो सके या उसको कभी भी ग्रुप में उसकी बातों को सुना ना जाए, ये उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो वो भी अपने आप को करता है कि मैं क्यों इस चीज़ को दूँ अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। नेक्स्ट इज डैमेज रिलेशनशिप। अगेन डैमेज रिलेशनशिप मीन्स हियर दैट in between the teams, in between the colleagues, in between the organizations heads. So अगर हमारे डैमेज रिलेशनशिप्स रहेंगे, जो हमें प्रोजेक्ट पे अचीवमेंट लेनी होंगी वो हम कभी ले नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे को हमारे डैमेज रिलेशनशिप्स होंगे और हमें कभी फर्दर हेल्प होगी तो ना कोई हमारी हेल्प करेगा और ना ही हमारे को कोई अगेन हमारी कोई हेल्प लेना चाहेगा। नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सो गाइस, I want to ask, what is the negative organization culture here? Yes, Sanji. According to me, negative organization culture is toxic organization culture, where which some people form the group and group of their friends, and they always offer good things to their friends, and what their friends को आगे promote करते हैं and they leave other people behind. So that is negative organization culture in which nobody wants to continue नहीं करना चाहते organization से. They are always searching for some new job. Yes, you are right. Thank you, Aishwarya. So, yeah, she is right. In an organization, for an example, you are here. After 1 year or 2 years, you're going in the organization and you are in the under your manager. If you are lucky, you get a good manager, or you are unlucky, you didn't get a good manager. So, whenever you are in the organization, the toxic organization culture here, the manager starts watching your every single hours when you are in the organization for 8 hours. They're judging you, what you did in the 8 hours, your performance time, your break time, your lunch time, your tea time. They judge, they do micromanagement, and then you get frustrated after that. So what do you think? That toxic organization, I can't handle it. So मैं उसको छोड़ने की पूरी उसमें हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे toxic organization culture में काम नहीं कर पाऊँगा। मेरे लिए most important ये है कि मैं इसको छोड़ दूँ। Next, increase absenteeism. Again, अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, उसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे, तो एम्प्लॉइज अपने आप को क्या करते हैं, उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं। क्यों मैं उस चीज़ के अंदर जाऊँ, मेरे को उस चीज़ में जाके क्या फ़ायदा है मेरे लिए, ना मुझसे कुछ अपने ग्रोथ होगी, ना मेरे लिए कुछ होगा। इवन दो मैं उससे बेटर हूँ कि एब्सेंट रहूँ ऑर्गेनाइजेशन से और मैं अपने आप को फर्दर कहीं और रिसीव करूँ। नेक्स्ट इज रिसोर्स वेस्टेज। सो रिसोर्स वेस्टेज है दैट मीन्स that the amount of energy and time we spend into that productive hours, that we waste our time into resolving that conflict. For an example, take a college example. Before after the break, there is a one lecture, XYZ professor. So, but between the breaks, there is a fight between two friends, and also and other people are also come. They starting fight. When after the break, ma'am came. XYZ professor came, they see they are fighting to each other. But what ma'am thought, if I am giving today my 100%, that resources is good for me. But when professor enter into the classes, they see there is a fighting going on. So what the resources going into solve that conflict. What happened? Why it is happened? What are the reason behind it? So this is a way that here resource waste. Reputation damage. Again, as my previous resource person Anji Sharma talked about it, Ratan Tata versus Cyrus Mistry case. So here you all can see there is a damaged reputation about the Cyrus Mistry. This is one of the biggest example for the reputation damage.